For this lecture, we are going to study about the machinery which is involved in the process of hearing. And this machinery involves the ear. There's three parts: outer ear, middle ear, and the internal ear. So in this lecture, we are going to focus only upon the outer ear and the middle ear. So starting with the outer ear, the other name of the outer ear is pinna, and it has only one function: the collection of sound. Second is the middle ear. The structure देखें तो इसके अंदर तीन तरह की बोन्स होती है, which are also known as the ossicles, medius, incus and stapes. दो तरह की मसल्स होती है, the tensor tympani and the stapedius. Now focus upon the photograph. Here is the tensor tympani, medius, incus and stapes, and here are the two muscles, tensor tympani and the stapedius. So after the structure, it is the functions of the middle ear. इसके दो important function होते हैं. The first one is the impedance matching. अब ये impedance matching होता क्या है, इसकी significance क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. So first of all, see the arrangement. सबसे पहले क्या हुआ, साउंड सोर्स से साउंड आई और उसके बाद क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द साउंड्स अगेन गेट रिफ्लेक्टेड इन द ईयर. अब अगर हम ये जो फिजिक्स का प्रिंसिपल है वो अप्लाई करें इन द ईयर, तो होना क्या चाहिए. तो पहले उससे पहले अपन को देखना चाहिए अबाउट द मीडियम, बिकॉज साउंड इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव एंड इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मीडियम. तो एक्सटर्नल ईयर में मीडियम होता है इज एयर, इन द मिडिल ईयर अगेन एयर, एंड द इंटरनल ईयर इट इज़ लिक्विड. तो अब अगेन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसके बारे में सोचिए एंड अप्लाई द सेम प्रिंसिपल हियर. अगर ऐसा होता तो क्या होता, एक्सटर्नल ईयर से साउंड आती, एंटर इनटू द मिडिल ईयर, और इंटरनल ईयर में अधिकतर साउंड का क्या होता, रिफ्लेक्शन. और ऐसा होता तो हमें साउंड सुनाई देती है या नहीं, ऑलमोस्ट नहीं. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड या फिर इम्पीडेंस मैचिंग. अब इसको हम इस वाले सिनेरियो में लगाते हैं. सो इट वाज द इनिशियल एग्जांपल जो हमने देखा था. अब सपोज हम साउंड का एम्प्लीफिकेशन कर दें, मतलब जो साउंड आ रही है उसका वो ज़्यादा कर दें, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दें, तो क्या होगा देखिए, significant amount of sound entered inside the water. So we can apply the same principle in the process of hearing. So first of all, the sound entered into the external ear, and then the sound enters in the middle ear, and it is the sign of amplification of the sound, which lead to increase in intensity of the sound, and more amount of sound enters inside the internal ear. इसलिए आपको साउंड सुनाई देती है. And this amplification of the sound is known as impedance matching. So what are the causes of impedance matching? The first is because of difference in the surface area of the tympanic membrane and the oval window. And how much is the amplification? 17 times. इस चीज़ को समझते हैं. So here is the arrangement. सबसे पहले साउंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करती है, वाइब्रेशन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एंड ऑल द साउंड इज गोइंग टू फोकस अपॉन द स्मॉलर सरफेस एरिया. सो यहाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन द सरफेस एरिया. और उसका इफेक्ट क्या हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली द pressure is going to focus upon the smaller surface area, it is going to amplify, because the pressure depends upon the area, it is inversely proportional to the area.
तो अगर if there is decrease in area, pressure is going to increase. So in this way there is amplification of the pressure. Second mechanism is lever like motion of Milius and incus, and that lead to amplification of the sound. How much? 1.3 times, and the total amplification is this. So ये जो सेकंड पॉइंट है लीवर लाइक मोशन, इसका मतलब क्या हुआ? ये लीवर लाइक मोशन आपने स्कूल में पढ़ा होगा इन द फिज़िक्स, तो इसको देखते हैं. तो ये अपने भाई साहब हैं, इनको इस स्टोन को हटाना है, ये जो रॉक देख रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक स्ट्रिक थी और एक फलक्रम था, तो उन्होंने लगाया और एक तरफ फोर्स लगाया, और जैसे ही फोर्स लगाया स्टोन हिल गया. तो बेसिकली इन्होंने जो फंडा अपनाया दैट वाज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द फोर्स, एंड दिस एम्प्लीफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द फुलक्रम. ये आदमी के पास होना चाहिए या फिर रॉक के पास. अगर आपको फोर्स एम्प्लीफाई करना है तो इट शुड बी नियर द स्टोन. स्टोन के जितने पास होगा एम्प्लीफिकेशन उतना ज़्यादा होगा. तो मैंने कहा इस फंडे को लगाते हैं अपॉन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड. एंड साउंड का एम्प्लीफिकेशन होता कैसे? बाय एम्प्लीफाइंग द प्रेशर, एंड द प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द फोर्स. प्रेशर कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया. सो देखते हैं द लीवर लाइक मोशन ऑफ मीलियस एंड इनकस. देखिए, Milius, incus, stapes. Milius is attached to the tympanic membrane, and other side you can see the whole window. Sound आके strike हुई tympanic membrane पे, it lead to lever like motion of Milius and incus. Now, ultimately it lead to amplification of the pressure, which appear as amplification of the sound. So the functions of the middle ear: first function impedance matching, and second function is the attenuation reflex. Attenuation reflex is also known as the tympanic reflex. It is important. It is important because ये हमारे इंटरनल ईयर को हाई इंटेंसिटी साउंड से जो इंजरी हो सकती है उससे बचाता है. हाउ? हाई इंटेंसिटी साउंड यहाँ से आई, इट एंटर्ड इनटू द मिडिल ईयर, बट देयर विल बी नो एंट्री ऑफ द हाई इंटेंसिटी साउंड इनटू द इंटरनल ईयर बिकॉज ऑफ द टिम्पेनिक रिफ्लेक्स. तो इस रिफ्लेक्स का मैकेनिज्म होता कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई इंटेंसिटी साउंड या फिर loud sound enter into the ear, and through the hearing pathway वो जाती है up to the level of CNS, and after that there will be starting of the reflex, and there will be contraction of the tensor tympani and the stapedius, which lead to inactivation of the complete system of the Milius, incus and stapes. उससे क्या होगा? There will be no transmission of the sound from the middle ear and into the internal ear, so there will be no injury of the hair cell. So in this way we have studied about the outer ear and the middle ear. The next lecture we will study about the inner ear. Okay, thank you.